Hi, this is Pramod Jaiswal. Once again, this is another video for murder in the cathedral. This time I am discussing about the tempters which come to Thomas Becket in the cathedral in order to warn him of the dire consequences for the choice he has taken of martyrdom. They give suggestions. There are four tempters which visit Thomas Becket. So let's see. The tempters, as we see, are Thomas Becket's imagination. T.S. Eliot has used these tempters in order to project to the audience about what is going on in the mind of Thomas Becket. So he has used the tempters in order to represent Thomas' imagination. T.S. Eliot has used a character, that is of Thomas Becket, whose spiritual growth depends upon surrendering his will to God. Now there is a conflict. He is very aspirant, he is very eager to lead an eternal life, and he believes that it is only through martyrdom that he can achieve. So God, the sense of tempters is important as it introduces the morality play pattern in the play, Murder in the Cathedral. And T.S. Eliot has also used personification. And as I have told you, the tempters have come to warn him of the dire consequences. The first tempter is unexpected. He never expected, Thomas Becket never expected of him. It is marked about his spiritual pride. He tells him that his choice for the eternal, that eternal life over the temporal life, it's a clever one. But he also suggests him it's better that he stays on earth, choose a comfortable life, and he should forget about martyrdom, because service to man is service to God. Once again, the tempter asks Becket, Thomas Becket, to move away from the still point of God. He refers to the turning wheel, that the center point refers to God, and the spokes connecting it, it refers to the coordination with the center, that is God. The center represents God and the spoke represents coordination with the center. For the smooth running of the wheel, this also refers to one's life. Now, the second tempter arrives. He warns Becket's intent love for power and tells him about the goodness that he can do on earth for God with his earthly power, the power which he has. When the tempter tells Becket कि किंग से ज्वाइन मिल जाओ एंड यूनाइट अगेंस्ट इंग्लैंड एनिमीज़, क्योंकि इंग्लैंड का एनिमीज़ थे रोमन्स, और बकेट जो था वो रोमन्स के साथ तालमेल बैठा रहे थे. The Becket says that he cannot come down from a higher to a lower level of power. This shows that he is not free from spiritual pride. He is still entangled in the web of his own conflict. Now the third tempter, he represents the barons. He says that since Becket's friendship with the king, Henry II, cannot be mended, he should join hands with New Alliance. And barons are the backbone of the nation. The real friendship, once ended, cannot be mended. That is about the king which he has broken the friendship. Tempter says that
Since Bucket's friendship with the king has snapped, he should form new alliances. उसे रोमन्स के साथ हाथ मिला लेना चाहिए. लेकिन if Bucket joined these powers, they can put an end to tyranny of the king's court. The tempter says, the king will trust only his own power and no one else's. The church and those against him have every right to come together to fight the king. लेकिन बकेट कहता है, now he cannot trust the king anymore. It is better to trust God alone. The church and those against him have every right to come together to fight the king. Bucket also says, he who ruled like an eagle among doves, जो कि डव्स में ईगल की तरह, राजा की तरह रहा है, now rules as wolf among wolves. ये ऐसा कैसे हो सकता है? He does not accept it. And he dismisses the third, saying, no one shall say that I betrayed a king. मैं साफ कहता हूँ. और वो रेफरेंस भी देता है सैमसन का. He says that as Samson pulled down pillars, बहुत ही शक्तिशाली था सैमसन, और प्रूव करने के लिए कि अपना बहुत ताकतवर है, वो पिलर्स को, महल का पिलर्स को गिरा देता है. सो पुल डाउन द सेम डिस्ट्रक्शन ऑन हिमसेल्फ, और गिराने से तो खुद भी उसी के अंदर दब गया. सो इफ बकेट एक्ट्स अगेंस्ट द किंग, नाउ इट वुड फॉल शॉर्ट ऑफ सैमसन्स ट्रायम्फ एंड वुड ओनली डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ. वो सैमसन के साथ कंपेयर करता है कि अगर वो ऐसा करता है, किंग के अगेंस्ट जाता है, किंग से हाथ नहीं मिलाता है, तो ही इज़ इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ. नाउ द फोर्थ टेम्पटेटर अराइव्स. दैट इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड. Bucket had never thought of him coming. He taunts Bucket about his spiritual pride. उस पर ताना कसी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं. He reminds Bucket of his own opening speech, जो खुद वो अपने स्पीच में sermonizing में कहा था, sermon देने में, preaching करने में, about action and suffering का एक दूसरे से रिलेशन है. एक्शन ही सफरिंग है और सफरिंग ही एक्शन है. और बकेट इज़ ऑलमोस्ट इन डेंजर ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द एबिस ऑफ डिस्पेयर, और बहुत ही परेशान होता है. डिस्पेयर है, होपलेसनेस में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. हाँ, डिलेमा में है. बोथ इन द क्रिसमस सर्मन एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्ले. ऐसी हालत में फोर्थ टेम्पटर जो होता है वो लीव चले जाते हैं, कहते हुए बकेट्स ओपनिंग स्पीच अबाउट एक्शन एंड सफरिंग. टेम्पटर ऑल्सो दे टॉक अबाउट द टर्निंग ऑफ द व्हील, जैसा कि पहले भी डिस्कशन मैंने किया है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. द सेंटर पॉइंट जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, और स्पोक जो कनेक्शन है व्हील से, वो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ द व्हील विद द सेंटर, दैट इज़ गॉड. तो ही टॉक्स अबाउट द टर्निंग ऑफ द व्हील. ही रेफर्स टू इट एज समथिंग विच मेक्स एक्शन एंड सफरिंग मीनिंगलेस. उनके हिसाब से कि ये तो कि क्या एक्शन आप करेंगे और सफरिंग उसका कैसे होगा, ये तालमेल बहुत ही मुश्किल है ताना बाना का. ये तो ईश्वर ही जानते हैं. बकेट जो है वो समझ नहीं पाता. ही फील्स ट्रैप्ड. वो अपने ही जाल में बुन गया है. रिफ्लेक्ट इन द आयरॉनिकल रेपिटिशन
ऑफ बकेट्स ओन स्पीच, उसी के स्पीच को टेम्प्टर रिपीट कर रहे हैं, तो वो दुविधा में आ जा रहे हैं। तो बकेट कहते हैं द टीचर हैज़ नाउ बिकम द प्यूपिल। पहले वो सरमन देते थे, प्रीच करते थे, अब नाउ उसी के स्पीच को टेम्प्टर उसको स्टूडेंट समझ के समझा रहे हैं। एंड ही हैज़ टू लर्न द ट्रू मीनिंग ऑफ मार्टायरडम। वो खो गए हैं। Despair and pride are seen only in relation to man's will, not in God's. तो ये तो जैसा कि कहा, बकेट सेज द टीचर हैज़ नाउ बिकम द प्यूपिल, और बकेट हैज़ टू लर्न अ लॉट अबाउट व्हाट इज़ रियली मार्टायरडम। वो लोग तो कह रहे हैं कि इटर्नल लाइफ पे बिलीव मत कीजिए, जो अर्थली लाइफ है उस पर बिलीव कीजिए, एंड सर्व द पीपल। इफ़ यू सर्व मैनकाइंड इट इज़ सर्विस टू गॉड। और ये समझाते हुए द फोर टेम्प्टर्स सिंग टुगेदर, और ये कह रहे हैं थॉमस बकेट को कि ही इज़ ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न है, ज़िद्दी है, एंड ही इज़ डिटर्मिन ऑन डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आता है तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, दोस्तों को बताइए ताकि सभी लाभान्वित हों। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो, कुछ कन्वे करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। वंस अगेन आई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।